अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ये पॉलिनेशन होते हैं ये it occurs by different agents। उसमें देखा था हमने it occurs by the help of water, by insects, by birds, by bats, by animals, etc. Now today we are going to discuss types of pollination। पॉलिनेशन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। पॉलिनेशन इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, transfer of pollen grains from anther to stigma. So now we are discuss types of pollination. There are two types of pollinations. One is self-pollination and another one is the cross-pollination. Self-pollination and cross-pollination. Since हमें पता ही है कि जो flowers हैं there are generally of two types. Either flower may be a bisexual flower or it may be a unisexual flower. ठीक है, bisexual means कि both the sexes are present, male and female. Both male and female sexes are present in the same flower. Whereas in case of unisexual, only one sex is present. That means in this case we will be having male flower separate and a female flower separate. ठीक है, जो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के ये आपको दिमाग में रखना है। इस जब आपको ये समझ में आएगा तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन खुद ही समझ आएगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स जो होता है वो या तो सेम फ्लावर पे होता है, मतलब सेम फ्लावर हमारे पास एक फ्लावर है, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ्लावर है। ठीक है, अगर जो इसका एंथर है, अगर इससे पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और वो किस पे आएंगे, इसी कार्पेल पे, इसी फ्लावर के कार्पेल पे अगर ये पोलन ग्रेन्स जमा होंगे, डिपॉजिट होंगे, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इट इज कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा जो केस इसमें आता है दैट इज बिटवीन द फ्लावर्स, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स occurs between the flowers present on the same plant. ठीक है, वो जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है इसमें the transfer of pollen grains from anther to stigma either in the same flower or between the flowers present on the same plant। ये समझ आपको ऐसे आएगा, जो ये सेम फ्लावर होता है इट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये फ्लावर जो है इट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है वो इसी के मेल पार्ट से ट्रांसफर होके इसी के फीमेल पार्ट पे आ जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा जो केस है कि एक ही प्लांट पे, से फॉर एग्जांपल दिस इज मेल फ्लावर and this is female flower, but they are present on the same plant. When transfer of pollen grains takes place from male flower to the female flower present on the same plant, that is also called as the self pollination। उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं। गो सिंपल पर अगर इस वनो कि सेल्फ पॉलिनेशन अत मह यह कि अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हेकन गसित, यह गसित अक्सी फ्लावरस मह,
अक्सी फ्लावर्स में तथ फ्लावर्स में मेल पार्ट ते प्रेजेंट फीमेल पार्ट ते प्रेजेंट बे हेकि तथ केस में गसित कि अक्सी कुलिस पे मेल फ्लावर ते प्रेजेंट फीमेल फ्लावर ते प्रेजेंट दिस इज कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन येली सेम फ्लावर व्हेन इट occurs in the same flower when it occurs in the same flower this is called as the autogamy इसको हम क्या बोलते हैं this is called as the autogamy and when it occurs between two different flowers but they are present on the same plant that time it's known as geitonogamy that time it is known as geitonogamy so that means self pollination जो होती है it is of two types one is autogamy and second one is the geitonogamy autogamy when the transfer of pollen grains takes place from anther to the stigma of the same flower ठीक है that is called as the autogamy and geitonogamy when the transfer of pollen grains takes place between two different flowers between two different flowers but they both are present on the same plant that is called as the geitonogamy this is self pollination now the cross pollination in cross pollination the transfer of pollen grains it takes place between flowers which are present on different plants it takes place transfer of pollen grains takes place between flowers which are present on different plants they may be either monoecious or dioecious they may be either bisexual or unisexual ठीक है गो क्रॉस पॉलिनेशन जो है क्रॉस पॉलिनेशन छे अस वनान कि यस इज पॉलिनेशन यथ म ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स गसान छ from one flower to another flower but these flowers they are present on different plants तम flowers तम हेकन bisexual ते असित तम हेकन असित क्या unisexual ते तम हेकन bisexual ते असित तम हेकन unisexual ते असित so I think it is enough for today